हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASG फार्मा ट्यूब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपके लिए ही बेनिफिट है। आपको मोर फार्मा ट्यूटोरियल्स एंड अपडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएंगी। बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आज हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे 51 क्वेश्चन से तो 100 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन की ओर। 51 question is, in a prescription, RX is an abbreviation of the Latin word recipe, meaning, इसका मीनिंग है to take. Then 52 question, the meaning and the full form of add, leave, are and respectively. इसका है करेक्ट आंसर as much as you possible, यानी कि एड लिबिटियम। ठीक है, देन 53 क्वेश्चन, द एज ऑफ ए चाइल्ड इज 10 ईयर, एज ऑफ ए चाइल्ड इज 10 ईयर्स। अडल्ट डोज दिया है 500 mg और हमें बोला है कैलकुलेट करने के लिए अप्रोप्रिएट डोज ऑफ द सेम ड्रग फॉर द चाइल्ड। अभी हमें बताया कि जो चाइल्ड डोज होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए यंग्स फार्मूला होता है, डिलिंग्स फार्मूला होता है, क्लार्क्स फार्मूला होता है। तो अभी हम इसमें ऑप्शन में तो हमें अभी क्लार्क्स फार्मूला दिया हुआ नहीं है, तो हम यंग्स और डिलिंग्स फार्मूला से कैलकुलेट करने के लिए ट्राई करेंगे। तो पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे यंग्स फार्मूला से। तो यंग्स फार्मूला होता है एज ऑफ अ चाइल्ड दैट इज 10 प्लस एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 इनटू अडल्ट डोज विच इज़ द 500 mg। तो ये आता है हमारा 5000 बाई 22। इसका आंसर आता है अप्रॉक्सीमेट 227। तो 227 अभी डीलिंग्स में भी है और यंग्स में भी है, बट हमने यंग्स फार्मूला से निकाला, तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज द 227 as per Young's formula. Then 54 question, the liquid dosage form of a paracetamol contains 240 by 5 ml of paracetamol. The usual pediatric dose दिया है 15 mg kg of body weight। तो पूछा है कि how much liquid should be given as a dose to an 8-year-old child having 25 kg of a body weight। तो पहले तो हमें चाइल्ड का बॉडी वेट दिया है विच इज़ द 25 kg। देन रिक्वायर्ड डोसेज जो है पीडियाट्रिक 8-year-olds पीडियाट्रिक में आते हैं, तो रिक्वायर्ड डोसेज इज 15 दिया है और टोटल डोसेज अभी हम निकालते हैं विच इज़ द 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 जो होता है 375। तो अभी जो 375 है, अभी हमें क्या बोला इसमें, हाउ मच लिक्विड, यानी कि वॉल्यूम निकालना है लिक्विड का। तो अभी जो 240 mg है वो एक्चुअल लेंगे हम 240 mg बाई 5 ml इज इक्वल्स टू 375 इंटू एक्स ml। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर आएगा 7.81। सो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देन 55 question, when procaine and adrenaline are given in a combinational form, the duration of action of procaine is increased. This phenomenon is known as synergism. 56 question, methylparaben or the propylparaben may be used in the preparation of ointment as, क्या करके यूज करते हैं, as a preservative. Then 57th question, carbohydrate is given as a source of carbon in a culture medium. Which gas will evolve during the growth of bacteria in that medium? Which gas? It is carbon dioxide, which is the CO2. Then 58 question, if bacteria are present in a hypotonic medium, what will happen to the bacterial cells? वो स्वेल होंगे एंड बर्स्ट हो जाएंगे, लाइक फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, स्वेल एंड बर्स्ट। ठीक है, देन 59th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ बोथ एरोब्स एंड द एनारोब्स? करेक्ट आंसर इज फ्लूइड thioglycolate medium, fluid thioglycolate medium. Then the contains specific directions for the pharmacist to how to compound the medication. तो ये आता है सब्सक्रिप्शन पार्ट होता है उसमें। देन what does the Latin term dolere urgente signifies in a prescription? तो ये करता है to be taken when the pain is severe. Then 62 question, a prescription contains oculant ciprofloxacin 0.3 BID यानी कि twice a day। तो ये दो ऑप्शंस तो हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। देन oculant बोला यानी कि आई, सो करेक्ट आंसर इज twice a day apply on the eyes. Then 63 question, fluid thioglycolate media is used for the detection of, अभी हम लोगों ने पढ़ा था एरोब्स एंड द एरोब्स। देन व्हाट इज द डोज ऑफ द 50 LB चाइल्ड इफ द अडल्ट डोज इज 20 mg? डोज पूछा है 50 LB चाइल्ड के लिए, तो इसमें हम लोग क्लर्क्स जो रूल है वो अभी यूज़ करेंगे, क्लर्क्स रूल्स। तो क्लर्क्स रूल क्या कहता है, 50 विच इज़ द चाइल्ड वेट, देन 150 जो कि अडल्ट वेट रहता है, और अभी हम उसे अडल्ट डोज से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 कट,
100 by 15, which is the 6.6. So correct answer is 2. Then 65 question, which of the following is not an inodilator? Which of the following is not an inodilator? Telva tolvapitam, tolvaptan, ठीक है. Then which of the following is a sodium glucose co-transport to SGLT2 inhibitor, which it is dapagliflozin. Then which of the following effect is produced by the saraglitazar? So that is the decreasing glucose as well as lipid in the plasma. Then 68 question, ivermectin exerts its antihelminthic action through activation of glutamate gated chlorine minus channel glutamate. Then 69th question, which enzyme catalyzes the bioactivation of nitroglycerin into NO, nitric acid? So nitrous oxide, sorry. So its correct answer is aldehyde dehydrogenase 2. Then 70 question, which antihypertensive drug is a direct renin inhibitor? So it is aliskiren. Then 71 question, adverse side effects of the selective serotonin reuptake inhibitors like insomnia, increased anxiety, irritability and decreased libido are due to excessive stimulation of brain 5-HT2 receptors. Then 72 question, which of the following oral hypoglycemics does not enhance insulin release? So which is the drug? It is the pramlinitin. Then 73, dapagliflozin causes hypoglycemia by increasing the glucose excretion in the urine. 74 question, which of the following is used as an antidote for organophosphates and carbamate pesticides poisoning? ये हमने बहुत बार पढ़ा है क्वेश्चन. इसका करेक्ट आंसर है एट्रोपिन सल्फेट. देन 75 क्वेश्चन, टेरेटोजेनिसिटी रिफर्स टू द एबिलिटी. टेरेटोजेनिसिटी किस में होता है? फीटस में होता है. सो करेक्ट आंसर है इसका एबिलिटी टू कॉज डिफेक्ट्स इन द फीटस. 76 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द MS टेस्ट? इट यूजेस बैक्टीरिया to assess the geneticity of the chemicals. Then pre-administration of which drug reduces severity of the adverse effects of dimercaprol injections? तो एंटीहिस्टामिन्स जो होता है इसका प्री एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है टू रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट विच इज जनरेटेड फ्रॉम द डाइमरकैप्रल इंजेक्शन. देन 78 क्वेश्चन, which of the following statement is true regarding aminoglycoside antibiotics? Amino and glycoside antibiotics जो होते हैं are more active in its alkaline medium, right? So B is the correct answer. Then 79 question, which of the following statement is not true regarding gemfibrozil? Is decreases the synthesis of lipoprotein lipases. Then 80 question, which of the following is a correct match of a drug and its mechanism of action in the management of congestive heart failure? It is levosimendan, which in mechanism of action is positive inotropic effect. Then 81 question, which of the following is not a teratogen? Not a teratogen पूछा है तो जो हमारा एम्फोटेरिसिन बी है ये टेराटोजन नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि थैलिडोमाइड की भी एक ट्रेजेडी हुई है, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन की भी हुई है. सो एम्फोटेरिसिन बी इज द करेक्ट आंसर. देन 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंड्यूसर ऑफ ए ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम? ग्रेपफ्रूट जूस. Then 83 question, which of the following terms denotes the average duration in days between placing of an order and receipt of the material? It is the lead time. Then in ADR, usual and the unusual and the unexpected drug effects are known as idiosyncrasy. Then TDM refers to the therapeutic dose monitoring. Which of the following is used to improve medication adherence in patients with tuberculosis? Directly observed therapy. Then the first step of patient counseling after meeting the patient is introduction. 88 question, is the space required for a hospital pharmacy in a 200 bedded hospital? 1200 स्क्वायर फीट लगती है स्पेस, ठीक है. देन 89 क्वेश्चन, इन ABC एनालिसिस द A items are 10 to 20% of items and 70 to 80% of the expenditures.
is an important inventory control technique that is useful in determining how much to order. So D is the correct answer. EOQ जो होते हैं important inventory control technique है which is useful in determining how much to order. Then which of the following is considered the heart of the patient counseling session? किसे कहते हैं हम heart of the patient counseling session? C. Counseling content. Then 92 question, which category of ABC analysis consists of approximately 70% expenditure and 10% अभी पढ़ा हम लोगों ने, which is the A. A is the correct answer. Then which type of drug information resources to indexing and abstracting services comes under? B. Secondary. Then the time interval between placing the order of a purchase and receipt of items. देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है उसमें रिपीट भी हुए हैं, मतलब वही शफल करके या फिर कंफ्यूजन के लिए दिए हुए. सो करेक्ट आंसर इज द लीड टाइम. 95 question, in which drug distribution systems are medications ordered, packed, handled, administered, charged in multiple single doses units containing a predetermined amount of drugs? Is the unit doses of dispensing method. 96, which of the following is not an advantage of the coding system of materials? It's help identify spurious drug. नॉट बोला है, स्पूरियस ड्रग आइडेंटिफाई करने के लिए वो हेल्प नहीं करता है. 97th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर फार्माकोविजिलेंस इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स एंड द रेगुलेटरी सर्विसेज? इट इज़ द इंडियन फार्माकोपियल कमीशन. देन 98 क्वेश्चन, understanding the reduction elimination of signs and symptoms is a part of assessment of therapeutic goals. 99 question, which of the following statements related to the location of a drug information service center is incorrect? Incorrect पूछा तो incorrect is it should be near the operation center. कभी भी near the operation center नहीं रहता है. So correct answer is C. Then 100 question, reduced bronchodilation by beta 2 agonist prescribed with a non-selective beta blocker is an example of pharmacodynamic drug-drug interaction. So this is all about the 100 questions of the assistant professor exam which is conducted by the MPSC. अभी देखो आपने हम लोगों ने जो जितने भी क्वेश्चंस पढ़े उससे हम लोग एक आइडिया आ चुकी है कि कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो जो अगला वीडियो अभी मैं डालने वाली हूँ वो वेटेज जो है, एक एक टॉपिक का वेटेज हम लोग को किस किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए और किस टॉपिक को कितना वेटेज देना चाहिए इसके रिगार्डिंग में डिस्कस करूँगी. सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दिस एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.